Welcome back to our next video, that is qualities of money. So 7 points are there total we are going to study in our today's video. First is general acceptability. So anyone will accept the money immediately. Deny करेगा क्या कोई? If you will offer them money for the exchange of goods, will that person deny for the money? No, he will accept it. So that means the money has the general acceptability. Because if we compare it with the barter system, during barter system हो सकता था कि अगर लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स देखे जैसे उस टाइम पे नहीं होती थी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, बट इन द केस ऑफ मनी इट इज़ एक्सेप्टेड ईजीली. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी का मीनिंग मीन्स व्हाट इट इज़ डिवीजन, डिवाइडेड. सो द मनी can be divided into various parts, small denominations. Money is available in the smaller and smaller denominations. For example, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 100 and so on. In smaller denominations also it is available. जैसे barter system I told you कि some goods were there which the division was not possible of such goods, but during now as the evolution of money has taken place, so divisibility is possible. Durability, next third point. Durability, that means it is durable in the nature. Even if you keep 100 rupees or 2000 rupees notes, and if you remove those notes after 5 years, okay, if you just keep it in a cupboard, after 5 years, after 2 years, if you take out those notes, it will be in the same condition, in the condition which you have kept it in your cupboard. So that means it is durable. Cognizability. कॉग्निजेबिलिटी का मीनिंग है दैट इज़ रिकॉग्नाइजेबल. सो मनी कैन बी और करेंसी नोट्स कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम द अदर नोट्स. जो भी डुप्लीकेशंस आएंगे उसके, सो वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज गुड्स. बाकी गुड्स से तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना. मैंने अगर सामने इफ़ आई विल कीप वन थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एनी कॉमोडिटी, एंड ऑन द अदर साइड इफ़ आई विल कीप करेंसी नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो कैन यू रिकॉग्नाइज द करेंसी नोट? हाँ, ये करेंसी नोट्स है और ये गुड्स है करके. येस, बिकॉज it can be easily recognizable. That means it is cognizability. Next is portability. Portability मतलब portable है वो. We can easily carry the currency notes or the coins from one place to the another place. Okay, it is not that much bulky. Because in barter system इतने goods लेकर जाओ एक साथ exchange के लिए, it was not possible. But in the case of money, it has the quality of portability. We can easily carry it from one place to another. नेक्स्ट इज होमोजेनिटी. होमोजेनिटी का मीनिंग है सेम. सो ऑल द करेंसी नोट्स आर सेम इन साइज, कलर, सेम. नाउअडेज इफ़ यू सी जो न्यू कलर के नोट्स आए, 2000 का ही ले लो, पिंक नोट इज देयर. सो सब पिंक नोट सेम है या अलग अलग कलर के? एक 2000 की पिंक कलर की आई, दूसरी ग्रीन आ गई, तीसरी येलो कलर की आई. इज इट लाइक दिस? नो. ऑल द 2000 रुपी नोट्स आर ऑफ द सेम कलर, सेम साइज, सेम शेप. दैट मीन्स इट इज़ नोन एज homogeneity. Next is stability. Stability, that means the value of the money is always stable. It will not change. Stable value रहती है उसकी, कभी change नहीं होगी value of the money. If the amount on the currency note, if it is 2000, then it will not change. It will be 2000 only. ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद अगर वो नोट बाहर निकाली तो उसकी वैल्यू 50,000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी. It's not like that. The value of the money will always remain stable. So it has the quality of stability too. So even this question can be asked for the agree disagree. Okay, thank you.